बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट मूसा खान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम कानून शहादत के आर्टिकल 2 की सब आर्टिकल 2 से स्टार्ट करेंगे। सब आर्टिकल 1 हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। अब सब आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन क्लास में कहते हैं कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन is connected with the other in any of the ways referred to in provisions of the order relating to the relevancy of facts। अब इसमें कहते हैं कि एक वाक़या किसी दूसरे वाक़ये के उस वक्त मुतल्लिक होगा जब एक वाक़या दूसरे के साथ इस तरीके या शक्ल में ताल्लुक़ या वाबस्ता या जुड़ा हुआ हो जिसका जिक्र इस आर्डर के रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स वाले चैप्टर में किया गया है। 3. The expression facts in issue includes any fact which from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब ये जो इबारत है facts in issue, इसको उर्दू में वाक़िअतन की तलब से भी मौसूम किया जाता है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वो वाक़ये शामिल हैं जिनसे बज़ाते खुद या किसी और वाक़ये के मुतालिक मौजूदगी, किसी फैक्ट की मौजूदगी, गैर मौजूदगी, फितरत या एक्सटेंट या कोई भी हक, जिम्मेदारी या लाचारी को माना या इनकार किया गया किसी कार्रवाई या केस में। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि वेन एवर अंडर प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर any court records on issue of fact, the fact to be asserted or denied and the answer to such issue is a fact in issue। अब इसकी तफसील में कहते हैं कि जब कभी सीपीसी के मुतालिक किसी भी कानून की शिक के नीचे कोई अदालत इश्यूज ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड करती है तो कोई अमर माना या इनकार किया गया हो इस इशू के जवाब में तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन में ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, यानी ए बी के मर्डर का या कत्ल का मुल्जिम है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू, उसकी जब ट्रायल स्टार्ट होगी, मुकदमा उसकी कार्रवाई शुरू होगी तो फैक्ट्स जो हैं वो फॉलोइंग फैक्ट्स जो हैं वो इशू में होंगे। दैट ए काज्ड बीज डेथ, कि ए ने बी की डेथ काज किया या ए ने बी को कत्ल किया। दैट ए हैड इंटेंडेड टू काज बीज डेथ, ये कि ए ने नियत की है कि वो बी को कत्ल कर दे। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, ये कि ए को बी से शदीद इश्तियाल मिला है। दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच काज बीज डेथ वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, ये कि ए की उस हरकत के वक्त जिसकी वजह से बी की मौत वाक़या हुई है ए उस काबिल ही न था अपने दिमागी नुक्स की वजह से कि उस काम की नोयत को जान सके। For a fact is said to be proved when after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। अब कोई वाक़या इस वक्त साबित शुदा कहलाएगा जब अदालत तमाम उमूर पर गौर करने के बाद जो इसमें पेश हों, या तो अदालत उसके वजूद पर यकीन करे या उसका होना इस कदर मुमकिन समझे कि एक आकिल शख्स इस मफरूज़े पर अमल पैरा होना चाहिए कि उसका वजूद है। A fact is said to be disproved when after considering matter before it, the court
either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. अब सब आर्टिकल 5 जो है 4 का रेसिप्रोकल है। कोई वाकया उस वक्त मुस्तरद कहलाएगा जब अदालत तमाम उमूर पर गौर करने के बाद जो उसमें पेश हुए हों उसकी गैर मौजूदगी पर यकीन करे या उसकी गैर मौजूदगी को उस कदर मुमकिन समझे कि एक आकिल शख्स को इस मफरूजे पर अमल पैरा होना चाहिए कि वो वाकया मौजूद ना है। 6 में है कि a fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। कोई वाकया तब तक साबित नहीं होगा जब तक ना उसका इस्बात और ना उसकी तरदीद हुई हो। 7. Whenever it is provided by this order that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it। जब भी इस ऑर्डर में दिया गया हो कि अदालत किसी वाक़ये को तस्वुर या उसको क़ियास कर सकती है तो उस वक्त तक अदालत उसे साबित समझेगी जब तक कि उसकी तरदीद ना हो गई हो या अदालत उसका सबूत भी तलब कर सके। सब आर्टिकल 8 है whenever it is directed by this order that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। यानी जब भी इस ऑर्डर में हिदायत की गई हो कि अदालत किसी वाक़ये को तस्वुर या उसको क़ियास कर सकती है तो जब तक उसकी तरदीद ना हो जाए अदालत उसे साबित ही समझेगी। सब आर्टिकल 9 When one fact is declared by the order to be conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी जब एक वाक़या किसी दूसरे वाक़ये का कंक्लूसिव यानी कतई सबूत हो तो एक वाक़ये के साबित होने पर दूसरे वाक़ये को साबित शुदा शुमार करेगी अदालत और उसकी तरदीद करने के लिए शहादत देने की इजाज़त नहीं देगी। चैप्टर 2 शुरू करते हैं जो कि गवाहों के बारे में है, कौन कौन गवाही दे सकता है। इसमें है all persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or of mind, or any other cause of the same kind। तमाम अशखास गवाही देने के अहल हैं दावत ये कि अदालत ये न समझे कि वो बचगाने या ज़ोईफुल उम्री या बीमारी ख्वाह वो जिस्मानी हो या जहनी या इसी किस्म की किसी और वजह से उन सवालात का जवाब देने से कासिर हों या उनको समझने से कासिर हों जो उनसे पूछे गए। इस आर्टिकल में 3 प्रोविजोज दी गई हैं, मतलब 3 शराइत हैं। Provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence। पहली शर्त यह है कि अगर किसी शख्स को अदालत ने झूठी गवाही या दरोखल्फी की सजा दी हो तो वो गवाही नहीं दे सकता। दूसरी शर्त देखते हैं कि provided further that the provisions of the first proviso shall not apply to a person about whom the court is satisfied that he has repented thereafter and mended his ways। अब मजीद शर्त यह है कि ये पहली शर्त का इतलाक उस शख्स पर नहीं होगा जिसने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं और तौबा तायब हो गया है और अदालत को इस बात का इत्मीनान भी हो गया।
provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualifications prescribed by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness, and where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. مزید شرط کیا ہے؟ یہ کہ عدالت احکام اسلام کی روح سے جو کہ قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں ان سے گواہ کی اہلیت کا تعین کرے گی، اور اگر ایسا گواہ موجود نہ ہو تو جو بھی گواہ دستیاب ہو اس کی گواہی لے سکے گی۔ ایکسپلینیشن ہے کہ lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answer to them. یعنی مجنون شخص گواہی دینے کے نااہل نہ ہوگا دعویٰ کیے کہ وہ جنون کی وجہ سے اس سے جو سوال کیے گئے ہیں ان کو نہ سمجھ سکے یا اس کا معقول جواب نہ دے سکے۔ Article 4. Judges and Magistrates. No judge or magistrate shall, except upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting. اب اس آرٹیکل سے پریویلیج کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے، یعنی ججز اور میجسٹریٹس کی کمیونیکیشن کو بھی پریویلیج کمیونیکیشن کا حق حاصل ہے۔ یعنی کسی جج یا میجسٹریٹ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی ایسے سوال کا جواب دیں جو کہ اس کے اپنے طرز عمل کے بارے میں ہو جب وہ ایز اے جج اور میجسٹریٹ کام کر رہا تھا، اور اس کو معلوم ہوا ہو ماں سوائے کسی ایسی عدالت کے حکم خاص پر جس کا وہ ماتحت، لیکن ایسے دیگر امور کی نسبت اس سے سوال کیے جا سکتے ہیں جو اس کی موجودگی میں واقع ہوئے ہوں جب وہ کام کر رہا تھا۔ السٹریشنز ہیں۔ السٹریشن A ہے کہ A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B the magistrate. B cannot be compelled to answer the questions as to this except upon the special order of superior court. یعنی A نے سیشن جج کی عدالت میں کارروائی کے دوران کہا کہ B یعنی میجسٹریٹ نے فلاں بیان ناجائز طور پر لیا تھا۔ اب B میجسٹریٹ کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کا جواب دے ماں سوائے کسی ایسی عدالت کے حکم خاص پر جس کے وہ ماتحت ہے۔ Illustration B. A is accused before the court of session of having given false evidence before B, a magistrate. B cannot be asked what A said, except upon the special order of superior court. A پر سیشن جج کی عدالت میں یہ الزام عائد ہے کہ اس نے B یعنی میجسٹریٹ کی عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے۔ اب B کو اعلیٰ عدالت کے حکم خاص کے بغیر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ A کی اس بات کا جواب دے۔ Illustration C. A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred. یعنی A پر سیشن جج کی عدالت میں یہ الزام عائد ہے کہ اس نے B یعنی میجسٹریٹ کی عدالت میں پولیس اہلکار کی قتل کی کوشش کی۔ اب B یعنی میجسٹریٹ کی عدالت میں جو کچھ ہوا
مجسٹریٹ سے اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 5 Communications during marriage. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suit between married persons or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other. یعنی کسی ایسے شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس معلومات کے بارے میں بتائے جو اس نے اپنے زمانے ازدواج میں اپنے ازدواجی ساتھی کے ساتھ شیئر کی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی یا جب وہ شادی کر چکا تھا، اور نہ ہی اس کو اجازت دی جائے گی جب تک کہ جس نے اطلاع دی تھی یا اس کا قائم مقام مفاد اس پر رضامند نہ ہو جائے۔ اب اس میں ایک شرط ہے، ایکسیپشن یہ ہے کہ ایسے مقدمے جن میں میاں بیوی فریقین ہوں یا میاں بیوی کے درمیان وہ مقدمے چلیں یا کیسز چلیں، یا ایسی کارروائی جس میں ایک فریق ازدواج نے دوسرے فریق کے خلاف کوئی جرم کیا ہو۔ ہم نے آرٹیکل 5 تک پڑھ لیا ہے، مزید آنے والی ویڈیو میں آرٹیکل 6 سے شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔